Yeah. So it start again. Okay. So basically our topic is basically how to install a Python in a computer. So one way is go to Google, search for an online Python interpreter, or you can also type online Python compiler, and there will some link will appear. You can go there, write your program and see the output. The another thing is that you have to go to the python.org, download the software Python IDLE. IDLE means integrated development learning environment, and install that software. When you will install that software and you open that software, there might be two windows, but there might be one window also. This window will basically always appear. This is known as the Python shell window and basically the output window. So compare this to our PyDroid app. We have two windows here. So one is the output window, which is known as the Python shell also. And when basically shell, this window is like a command prompt. Both of the windows will have the white background, okay, unlike our PyDroid case. So both of the windows will have white background by default, but you can change the background also. Okay, this is in your hand. So basically it works like a command prompt. You can give some commands here and you can see the output. Like if you can write print 5, so the output will appear here as 5. ठीक है, अगर आप print 5 करोगे ये कि because it is a Python command, so 5 will appear here. So it basically works as a Python shell. You can give individual Python command. So like one Python command might be like this: 2 plus 3. If you write 2 plus 3 here, again the 5 will appear because it will add 2 plus 3. So basically it is like a command prompt you have in Windows. Okay. And now in the top you will be seeing that basically the name of this window is Python shell, and on that and on the below that we have some menus like file menus there, and there are so many menus. And if you go to a file menu and click a new file, a new file will appear in a new window, and this window is called the editor window. Again on the top we have the name of the file and we have some options. So one option will be run, and in the run option if you go for the run module and press, or you press 5, you can do anything. Okay, go to the run module, go to the run menu, press the run module, or you directly press the keyboard key F5. So this program will run and you will see the output on this window. Okay, so it is works similarly as the PyDroid app. Okay, so that's all about how to install a Python IDE in computer. And now you can also use, so and everyone who has the computer can use this software and run the Python programs. Okay, now let us move back to our topic. So basically this is also known as a script. Okay, we will see that later. What is a script file or what is an interpreter shell or these things. Do not get confused. So let us see, I am sharing my screen and let us see more programs. Everyone please take a screenshot, run the programs, and if you do not, you will face problems. So let me share the screen. Yeah, so this is the program which we have already seen. Okay, Jaipur is equal to Ajmer. Ajmer is a value because it is surrounded by quotes, and Jaipur is a variable because it is not surrounded by quotes. So the first line will not give any output to the output window because we know that only the print function and the input function deals with the output window. So the first line does not have print or input function, so it will not deal with the आउटपुट विंडो. तो फर्स्ट लाइन का कोई भी आउटपुट जो है वो आउटपुट विंडो पर नहीं आएगा ना, फर्स्ट लाइन का बेसिकली कोई आउटपुट ही नहीं होगा ना. सेकेंड लाइन जो है वो प्रिंट फंक्शन है, जो उसका आउटपुट आएगा वो जो है आउटपुट विंडो पर जाता है, बिकॉज वी हैव लर्न दैट ओनली इनपुट एंड प्रिंट फंक्शन डील्स विद द आउटपुट विंडो. तो सेकेंड लाइन का आउटपुट जाएगा अजमेर, थर्ड का भी जाएगा, सेकेंड लाइन का आउटपुट जाएगा जयपुर बिकॉज इट इज ए वैल्यू सराउंडेड बाय कोड्स. The output of the third line will be Ajmer because again it is a value surrounded by quotes. The output of the fourth line, what will be, because Jaipur is a variable and the value of that variable is Ajmer, so the output of the fourth line will be Ajmer, and then in the last line we have print Ajmer. Ajmer is not surrounded by quotes, so it is basically a variable, but we have not created a variable Ajmer, so we will get the error. Okay, so you can see. Yeah, so the output of the second line is Jaipur, third Ajmer, fourth Ajmer, and the output of the fifth line is basically this long error. It starts from trace back to the last line name error, and the error you can see in the last line name Ajmer is not defined. Okay, so we have discussed this, so let's move back to the next program. Yeah, what will be the output of this command? What will be the output of this program? So basically print 5
5 is a value and print function basically deals with the output window. So print 5 basically it should print on the 5, it should print 5 on the output window, but because I am using hash in front of the line, that means basically it is a comment और every comment is basically not run. जो भी कमेंट होगा वो रन नहीं होता, क्योंकि ये कमेंट है, क्योंकि इसके पहले मैंने हैश लगा दिया, तो ये लाइन जो है बेसिकली रन नहीं होगी. रन नहीं होगी तो इसका कोई भी आउटपुट नहीं आएगा. लेट अस सी क्या आउटपुट आता है. देखो, देयर इज नो आउटपुट because it is a command, it will not be run. Okay, now move to the another 1138. Again it is a command, basically it is a multi-line commands, so it is basically surrounded by 3 triple quotes, है ना. इसमें 3 triple quotes लगा है ना. बेसिकली इसमें हमने क्या लिखा है, 3 जो है सिंगल कोट्स लगाए ना, 3 सिंगल कोट्स हमने लगाए ना. 3 सिंगल कोट्स इसमें हमने लगाए हैं. ऊपर भी हमने 3 सिंगल कोट्स लगाए, नीचे भी हमने 3 सिंगल कोट्स लगाए. तो व्हाट एवर कम्स इन बिटवीन द 3 सिंगल कोट्स इज बेसिकली ए कमेंट एंड इट विल नॉट बी रन, है ना. हमको ऐसा लग रहा होगा कि जयपुर प्रिंट करना चाहिए, लेकिन नहीं करेगा क्योंकि ये कमेंट के अंदर आ गया. देखो सीधा आउटपुट, यस, देयर इज नथिंग प्रिंटेड. ओके, सो लेट्स मूव बैक, मूव टू द अनदर एग्जांपल. या x equal to 5. So first line is basically x equal to 5. So a variable x will be created, है ना. एक वेरिएबल x क्रिएट होगा एंड द वैल्यू 5 विल बी पुट इनटू दैट. ठीक है, एक वेरिएबल x क्रिएट होगा और उसमें 5 वैल्यू चली जाएगी. बट देयर विल नथिंग बी प्रिंटेड ऑन द आउटपुट. क्यों? प्रिंट और इनपुट फंक्शन ही डील करते हैं बस, है ना. x इक्वल टू 5 में प्रिंट नहीं है तो आउटपुट विंडो पर कुछ भी नहीं आएगा ना. एंड फ्रॉम द थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना, थर्ड से फिफ्थ लाइन तक बेसिकली अगेन इट इज ए कमेंट, इट विल नॉट बी रन, सो देयर विल नॉट बी एनी आउटपुट. Seventh line is again a comment and there will not be any output. Ninth line is not a comment, it is a print function and print function is printing the value of x, है ना. x की वैल्यू 5 है क्योंकि बेसिकली फोर्थ लाइन भी कमेंटेड है, सेवंथ लाइन भी कमेंटेड है, तो बाकी कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, रन ही नहीं होगा. केवल हमारी फर्स्ट लाइन रन होगी और फिर सीधे हमारी नाइन्थ लाइन रन होगी. एंड वॉट एवर इन बिटवीन फर्स्ट एंड नाइन्थ लाइन इज बेसिकली a comment, so they will not be run. So the output here will be the value of x, which is 5. Let us see. Yes, so the 5 is printed. Okay, let's move back to the another example. Yeah, so basically this is the use of a command which I have shown you na. I have already talked about it, that basically this is the use of a command. Okay, so this is a multi-line command, 3 single quotes. So basically I have shown the details like author Shakti, date September 2020, this program is made for class 11th. Okay, so any information I want to give in the program I can give into the command section. So whenever, suppose if 2 months after I open this program, then I will get to know that okay, I have made this program because author is Shakti and date September 20. Okay, I made this program in September 2020 and this program I made for class 11. So it will help me to recall. Okay, all the details it will help me to recall. So this is the way you should also use the comments in your program. Okay, so I have used 3 single quotes here. ओके, मतलब 3 सिंगल कोट्स मैंने यूज करें. बेसिकली इट इज अ मल्टी लाइन कमेंट, सो यू कैन आल्सो यूज दैट. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स विल नॉट बी रन, ओनली द 8th लाइन विल बी रन. x equal to 10, so again a variable x will be created and the value 10 will be put into that. 10th line is again a comment. Okay, and 11th line is not a comment, so it will print x multiplied by 2, है ना. बेसिकली दिस स्टार साइन, बेसिकली एस्ट्रिक साइन is basically used for the multiplication, है ना. हम जो मल्टीप्लाई का साइन है वो तो x के लिए यूज में ले रहे हैं ना. जो जनरली हम मैथ्स में मल्टीप्लाई का साइन यूज लेते हैं वो x लेते हैं, लेकिन हम यहाँ तो x एक वेरिएबल की तरह यूज में लेते हैं ना, तो इसलिए जो वो वाला x है वो हम मल्टीप्लाई के लिए यूज में नहीं ले सकते. सो वी यूज दिस एस्ट्रिक साइन. ठीक है, सो एस्ट्रिक साइन इज बेसिकली यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन. सो x is multiplied by 2, so what is the output? Output will be 20. Okay, and here on the top of this line, है ना, 11th line के ऊपर जो 10th line है, in the 10th line I am basically using a comment that the following line multiply x with 2 and then print. Basically this type of comments you should use, है ना. जब भी आपको ये complex statement use कर रहे हैं that is difficult to understand for anyone, and if I am using a complex statement that is difficult to understand for the examiner, अगर आप कुछ ऐसी line use कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, एक कॉम्प्लेक्स लाइन यूज कर रहे हैं जो कि एग्जामिनर के लिए आसान नहीं है समझना, तो यू शुड यूज द कमेंट्स टू एक्सप्लेन दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू हियर. ठीक है, जैसे कि बिकॉज वी आर लर्निंग पाइथन एंड वी डू नॉट नो दैट print x star to what it will do. So I have used a comment in the 10th line which explains that what the 11th line is doing. Okay, so this way you should use the comments in your program so that the examiner can understand that what you are trying to do. But the comment that do not run, so it doesn't matter, only the 8th line and only the 11th line will run.
So let us see the output. Output should be 20. Yes. See the output. Yes, 20 is the output. Okay. Now let's move back again and see the another program. Yeah. So x equal to 5. Okay. Nothing will be printed. A variable will be created and value 5 will be put into that. Print 5. 5 is a value. So 5 will be printed. Print x. So x की जो value है वो print होगी because x is a variable. Its value is 5. So again 5 will be printed. So on the output window I will get 5 and one more 5. Yes, so on the output window I have 5 and one more 5. Let us see another example. 11, 3, 12. Yeah. So basically here I am saying that instead of using x, I should use the meaningful variable names, because x does not say anything about the value it contains. But suppose if 5 is a roll number and I am using a variable roll number, then it says that okay, the value it contains might be a roll number. So basically it makes your program more readable. It doesn't matter if I use x equal to 5 or print x into 2, the output will be same in this case also. Roll number is equal to 5, print roll number and print roll number into 2. But yeah, it makes your program more readable, so an examiner can understand. So suppose if I have a roll number 5, I have created a variable roll number and the value of that roll number is 5. And if I print roll number, so value will be printed. So in the second line output will be 5 and in the third line output will be 5 into 2, that is 10. Let us see. Yes, so the output is 5 and 10. Now let us move back to another program, that is 11, 3. Yeah. So again the same thing is there. I have taken a variable x, the value is NBF because NBF is surrounded by quotes, so it is a value. So x can contain its value NBF, and the print NBF is again surrounded by quotes, that means it is a value, so a value will be printed. So NBF will be printed on the second line. In the first line there will nothing be printed ना, फर्स्ट लाइन में कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि प्रिंट फंक्शन ही प्रिंट करता है, फर्स्ट लाइन में प्रिंट फंक्शन तो है नहीं. In the third line I am printing the value of x, x की value again NBF है, so again NBF will be printed. So I will have NBF and NBF. Yes, I have this. Now let us move back to another program, 11, 3 and 14. So 11, 3 means 11, 3, 14 means the class 11, chapter 3rd and the program number is 14. So again I have using the meaningful variable names. So I have taken a variable name instead of x because I can understand that okay, name means it contains some name. So name is a variable, again the value it contains in NBF, then print NBF because NBF is surrounded by quotes, doesn't matter whether it is a single quote or double quote, both are same. So the second line will print NBF, in the third line I will get the value of name which is NBF, in the third line again name will be printed. Let us see the output. Yes, again NBF and NBF. Now let us move to the another example. Yeah. So I am using comments instead of multi-line comments, I am using single line comment by using hash. So attaching or adding hash in front of all the lines. ठीक है, हर लाइन के पहले मैं अगर हैश लगा दूं तो सारी लाइंस जो है कमेंट्स हो जाएगी. ठीक है. So what this program does, write a program to take input from keyboard. I have told you earlier that input function is basically takes input from the keyboard. ठीक है. So I have to use input function. So write a program to take input from keyboard and print the same output to a screen or output window, and then print that input. ठीक है. So it is the same thing which we have discussed earlier. Name is equal to input. So whatever name, so name is equal to input. So 1 to 4th line is the comment. They will not be run. In the 6th line is not a comment, so it will be run and variable name will be created, and whatever will be the output of the input function is go into the name, है ना. तो name एक variable create होगा, input function call होगा, हम function को call करते हैं, जैसे input function call होगा हम output window पर चले जाएंगे, output window पर जाएंगे, I will enter some वैल्यू है ना, कुछ हम वैल्यू वहां पर डालेंगे, जो भी हम वैल्यू डालेंगे इनपुट फंक्शन उसको सराउंड कर देगा कोट्स में ना, इनपुट फंक्शन उसके आगे पीछे कोट्स लगा देगा और वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, वो वैल्यू जो है नेम को दे देगा. तो अगर सपोज हमने NBF एंटर करा तो नेम में क्या जाएगा, NBF कोट्स के अंदर आ जाएगा. ठीक है. अगर हमने स्कूल एंटर करा तो नेम में क्या आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा, कोट्स के अंदर आ जाएगा. और जब प्रिंट करूंगा उसको, है ना, तो क्या होगा, कोट्स हटाकर दोबारा से वही चीज प्रिंट हो जाएगी. लेट अस सी. So suppose I have entered here NBF, ठीक है, and I click the enter sign, the output is again NBF. Okay, so basically now you should understand what is happening. Let's move back to another example. Yeah, so the question is here now. So suppose I have roll number is equal to input. Okay, so again input function means I am calling an input function means it will go to the output window and it will ask me to enter some value, and whenever I enter some value, basically it will surround that value by quotes and will give it to the roll number.
So roll number will have the value whatever I will enter, and the print function will basically print roll number multiply by through. So whatever number I will enter, that will be multiplied by 3 and that will be printed. So let's move back. So let us suppose, or let's stop sharing the screen. I explain the concept. Yeah. So everyone is here. Okay. So suppose the question is, suppose I have this program integer. Okay, not integer, whatever. Yeah. So I have roll number. Roll number is equal to input function. Okay. It will not go. Come to this side. Okay. So I have this program. Roll number is basically input. Okay. I have this program, and then I'm trying to print roll number, and this is the asterisk sign. ठीक है, asterisk sign है, ASTERISC, ठीक है, asterisk sign, ASTERISC, ठीक है, ASTERISC, asterisk sign, ठीक है. तो ये है when I use here 2. So the question is what will the output? Okay, suppose if I use 3 here, so question is what will be the output? Use 2 here. Okay, so suppose what will be the output here? Anyone can guess. Suppose this line will be executed, what will happen? I will go to the output window and suppose I enter 10 here, so what will be the output? Anyone can guess? ठीक है, फटाफट से बताओ कि नेक्स्ट लाइन में यहां मेरे पास क्या होगा ना, यहां मेरे पास क्या होगा कि रोल नंबर, सपोज आई हैव एंटर्ड 10 हियर, तो यहां पर क्या होगा, इसका जो आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 10 है ना, तो आई रोल नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10. सो बेसिकली दिस लाइन इज इक्वल टू रोल नंबर इज इक्वल टू 10 इफ आई एंटर ए वैल्यू 10 हियर है ना. अगर मैंने यहाँ पर 10 एंटर डाला तो इनपुट का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा, तो रोल नंबर इज इक्वल टू 10. अब अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा तो व्हाट विल बी द आउटपुट हियर, यहाँ पर क्या पर आएगा बताओ फटाफट, 20 आएगा ना. देवेंद्र ने बताया 20, और क्या क्या किस किस के आंसर आ रहे हैं फटाफट बताओ. मीनल इज ऑल्सो सेइंग दैट इट विल बी 20 है ना, और क्या क्या बता रहे हैं बताओ फटाफट बताओ किसका आंसर क्या क्या आ रहा है. अमित कुमार इज ऑल्सो सेइंग 20, भवेश इज सेइंग 20, सबके 20 आ रहे हैं. अर्शिता सिंह, प्रियांशु सिंह, चलो बढ़िया है ना, चलो आप सीख गए हो काफी कुछ. अब देखो ठीक है, सो एवरीवन हैज लर्नड द थिंग कि इसका जो आउटपुट आएगा वो 20 आएगा. नाउ लेट्स मूव बैक टू आवर प्रोग्राम एंड लेट अस सी व्हाट इज द आउटपुट. ओके, so I am sharing a screen again. Yeah, so let us move back to the end pi. Yeah, so this is our program. Okay, so instead of 2 I should write here 3. Okay, so it is the same program. Let us see what is the output. So I am running this and I am entering a value 10. Okay, and now I press enter. Yeah, so output is 1010 and it is not 20. Yeah, what happened? ठीक है, so the output is 1010 and it is not 20. 1010 and not 20. ठीक है, ऐसा क्यों हो गया भाई, ये कैसे हो गया है ना, ये तो हमको पता ही नहीं था. चलो वापस आते हैं और समझते हैं कि ये क्या हो रहा है. शॉक लगा सबको कि ऐसा कैसे हो गया ना, 1010, ये शॉक लगा होगा सबको. चलो देखो क्या हो रहा है ना. देखो अब अगर वापस हम चीजों को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या कहा था कि इफ यू एंटर 10, बेसिकली इनपुट फंक्शन एड्स कोट्स अराउंड इट. तो इसका मतलब रोल नंबर इज इक्वल टू 10 नहीं होगा, रोल नंबर इज इक्वल टू 10 अराउंड कोट्स होगा. ठीक है, तो ये रोल नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, रोल नंबर इज इक्वल टू 10 अराउंड कोट्स. जो 10 होगा उसके आगे पीछे कोट्स लगा देता है, यही तो इनपुट फंक्शन करता है. अब ये आपका एक इंटीजर नहीं है, ये अब आपका एक स्ट्रिंग है. हमने देखा था दो तरह की वैल्यूज होती है, दो तरह के कांस्टेंट होते हैं, एक इंटीजर होता है और एक स्ट्रिंग होता है, और जिसके आगे पीछे कोट्स होता है वो क्या होता है आपका स्ट्रिंग होता है. अब ये देखो, ये जो मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है ये क्या करता है कि अगर आपने 10 को मल्टीप्लाई करा 2 से है ना, ये एस्ट्रिक साइन का है, तो यहाँ जो आपके पास आउटपुट आ जाता है 20 आ जाता है. ठीक है, अगर आपने किसी को भी मल्टीप्लाई करा, लेकिन अगर आपने 10 को करा ना तो ये क्या करता है कि इसी को वापस स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर देता है ना. स्ट्रिंग मल्टीप्लाई कैसे होती है कि वही स्ट्रिंग दोबारा ऐड हो जाती है अपने आगे. अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 के आगे एक बार और 10 लग जाएगा. अगर यहाँ 3 होता तो क्या आउटपुट आता, अगर यहाँ 3 होता तो ये 3 बार ऐड हो जाती, 10 10 और 10. ठीक है, ऐसे होता है. तो अगर मैं किसी इंटीजर और इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो वो तो मुझे आता है कि 10 इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, उसका मल्टीप्लिकेशन 20 होगा.
लेकिन अगर या अमित कुमार 101010, लेकिन अगर एक स्ट्रिंग है और दूसरा इंटीजर है तो क्या होता है, जो स्ट्रिंग होती है वो उतने ही टाइम्स ऐड हो जाती है अपने आप में, है ना। अगर क्योंकि बिकॉज 10 इज a string and 2 is an integer and whenever a string is multiplied by an integer so that string is adds itself to that number of time, ठीक है। अगर 10 है तो 10 अपने आप में 2 बार ऐड हो जाएगी, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 अपने आप में 3 बार ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हैपेंस है। तो ये आपको समझना है कि जब भी इनपुट फंक्शन जो है अगर आप एंटर करोगे तो वो एड्स कर देता है कोड्स, और कोड्स ऐड करते ही वो जो हो जाती है आपकी स्ट्रिंग हो जाती है। तो अब ये है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन देन, कि हमको तो वो प्रोग्राम बनाना था कि हम 10 एंटर करें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब सॉल्यूशन क्या है इसका, लेट अस सी अनदर फंक्शन व्हिच इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, है ना। सो सिमिलरली सपोज यू कैन आल्सो गेट सिमिलरली वी हैव दिस। क्या आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हम x क्यों यूज नहीं कर रहे ना मल्टीप्लाई के लिए, क्योंकि x तो हम वेरिएबल के लिए यूज कर रहे हैं ना, x इक्वल टू 5, हम तो x तो है वेरिएबल के लिए यूज करते हैं और x बहुत पॉपुलर वेरिएबल है, इसलिए जो हम x है मल्टीप्लाई के लिए यूज नहीं करते। इसलिए जो हम जो स्टार का साइन होता है ना, एस्ट्रिक का साइन, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज में रहते हैं। आपके पास और क्या क्या, इन सब चीजों को बोलते हैं बेसिकली ऑपरेटर्स, है ना। और पढ़ेंगे, वी विल स्टडी मोर अबाउट ऑपरेटर्स, वी विल स्टडी मोर नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, बट फॉर नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स है भाई। प्लस इज ए ऑपरेटर, माइनस, एंड दिस एस्ट्रिक साइन इज फॉर मल्टीप्लीकेशन, एंड दिस स्लैश साइन, slash, okay, this is known as slash. This slash sign is basically for division, okay. So try to use these all the operators, these 4 operators in your program and see the different outputs, okay. अपने से try करो, जितना try करोगे उतना ही सीखोगे, नहीं तो नहीं सीखोगे ना। अब देखो, so what is the solution of this problem then? अब इसका solution क्या है, इसका solution ये है कि अगर मेरे पास एक और फंक्शन है ना, अब मेरे को एक और फंक्शन यूज करना पड़ेगा, आई हैव टू यूज वन मोर फंक्शन एंड दैट फंक्शन इज इंटीजर फंक्शन, int फंक्शन ना। दिस इज वन मोर फंक्शन आई एम यूजिंग नाउ। सर रिपीट करो, ठीक है। वो तो ऑपरेटर्स बताए थे ना हमने, ऑपरेटर्स तो अभी आगे पढ़ेंगे हम, है ना। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, वो तो ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स तो वो पढ़ेंगे आगे आके, है ना। आप अलग अलग प्रोग्राम बनाओ, उसमें अलग अलग यूज कर करके देखो। देखो इंटीजर एक फंक्शन है, अब ये यूज करेंगे हम इंटीजर फंक्शन। व्हाट दिस फंक्शन डज, अगर इसके अंदर मैं कोई भी एक स्ट्रिंग डालता हूं ना, कोई भी एक वैल्यू डालता हूं, तो ये क्या करता है, उसके आजू बाजू जो कोड्स लगे हुए रिमूव कर देता है। तो इट रिमूव्स द कोड और फिर मेरे को जो है वो वैल्यू दे देगा। तो अगर मैंने यहाँ पर 10 डाला कोड्स में तो ये मेरे को 10 दे देगा बिना कोड्स के, ठीक है। तो अगर मैं एक स्ट्रिंग डाल रहा हूं तो उसके कोड्स हटा के मेरे को एक इंटीजर दे देगा ना। तो ये जो है ये इनपुट फंक्शन का काम होता है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, आई हैव टू यूज दिस फंक्शन, बस दैट्स इट, आई हैव टू यूज दिस फंक्शन। तो मुझे क्या करना है कि सपोज आई एम यूजिंग x इज इक्वल टू इनपुट, है ना, x इज इक्वल टू इनपुट एंड सपोज आई एंटर 10 हियर, है ना। सपोज आई एंटर 10 हियर, देन व्हाट शुड आई डू, आई शुड यू I can create another variable like this, y is equal to integer, and then I can use x, and in the print I can use print y multiplied by 2. So this one thing I can do. Another thing, the same thing I can do in another way, like x is equal to integer and then input, okay, and then I can write print x multiplied by 2. So both of these are the same thing, है ना। Here I have created one more variable and here I do not need one more variable. Basically I am using an input function and I am passing input to the integer function. Basically I am using int function and into the int function I am passing input function as an input. मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है उसमें इनपुट फंक्शन जो इसका आउटपुट आएगा उसको जो है मैं आपके इनपुट की तरह पास करवा रहा हूं ना। ये दोनों चीजें सेम है। यहां पर आपको काफी प्रैक्टिस की जरूरत है, डू प्रैक्टिस देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड, ओके। तो अब हम लेके चलते हैं आपको प्रोग्राम पर और देखते हैं आउटपुट क्या है। टाइम हमारे पास काफी कम बचा है, लेट अस सी द आउटपुट। या सो roll number input and roll number multiplied by 2. So basically we have seen this and move to this program, okay. Roll number is equal to integer and inside the integer function int function, basically you can say the int function. So roll number is equal to int function and inside the int function I am giving input which is output of the input function, ठीक है। So let's run this program, take a screenshot of this, okay. I hope, I probably assume that you are taking a screenshot and you must take, okay.
Now let's move. Yeah. So suppose now I have entered 10 here. Yeah. So the output is 20 now. Okay. So in this case, output is 20. So now it works as an integer. ठीक है, तो आपको ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो इंटीजर हमारा जो फंक्शन है आईएनटी फंक्शन है उसमें जो इनपुट पास करवा रहे हैं ना, उसमें वो इनपुट क्या है, जो आपका इनपुट फंक्शन है उसका आउटपुट पास करवा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर यू हैव टू डू सम थिंग्स, है ना, आपको अपने हिसाब से सोचना है। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम देखो, अगेन आई एम डूइंग द सेम थिंग, प्रिंट x मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड प्रिंट x प्लस 2। सो इन द सेकंड लाइन आउटपुट विल बी 20 एंड इन द थर्ड लाइन आउटपुट विल बी 12, है ना, वो क्यों प्लस ऑपरेटर है। तो ये देखो 10 मैंने एंटर करा और 20 और 12 आ गया ना। सो द सेम थिंग इज हियर, x विल बी बेसिकली, अगर आप 10 एंटर कर रहे हो तो x में 10 ही आएगा, कोट्स लगाकर नहीं आएगा। फिर आपने प्रिंट करा 10 मल्टीप्लाइड 2, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई है।